Good morning to everyone. Hope all the students are fine and safe at home wearing mask. Welcome to my channel, that is Nursing Gyan. Myself, I am Mr. Vaibhav Bhosle, Assistant Professor from Pravara Institute of Medical Sciences. So today I will be dealing with one of the fundamental topic which is related to the prevention. So today I will be dealing with levels of prevention. So everybody know prevention at present pandemic is very important to avoid particular risk factors or causes. So today we'll see related to the levels of prevention, its meaning, and examples related to the particular level of prevention. So first we will see what is prevention. So everybody, as you know, is the action aimed at eradicating, eliminating, or minimizing the impact of the disease or disability is nothing but prevention. Let's move towards the levels of prevention. There are 4 levels of prevention. First one is primordial prevention, second primary prevention, third one is secondary prevention, and fourth one is tertiary prevention. There are 4 levels of preventions are there. Coming to the first level of prevention, that is primordial prevention. It is a new concept which is receiving attention in the prevention of chronic diseases. It emphasizes on prevention of emergence of risk factors in countries or population which they have not yet appeared, and it helps in practicing very helpful lifestyles. It mainly focuses on mass media or mass education. Some of the examples are first one is health exercise that can avoid obesity, lifestyle modification. In corona era, you can say wearing mask, using sanitizer are the primordial prevention which usually avoids the disease before only. Coming to the second one, that is primary prevention. प्राइमरी प्रिवेंशन इज एक्शन टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिसीज़. मतलब डिसीज़ आने से पहले ही जो एक्शन लेते हैं उसको प्राइमरी प्रिवेंशन बोलते हैं. इट सिग्निफाइज इंटरवेंशन इन प्री पैथोजेनेसिस फेज. जैसे कि मैंने बोला, ये डिसीज़ होने से पहले ही इंटरवेंशन इसमें लेते हैं. लाइक इम्यूनाइजेशन. रिसेंटली इम्यूनाइजेशन का एक एग्जांपल बोलता हूँ. एक हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आता है. लाइक कोविशील्ड और कोवैक्सीन आप ले रहे हो टू अवॉइड कोविड. So third one is secondary prevention. Secondary prevention, action which halts the progress of disease at its incipient stage only. Incipient मतलब early stage only. It usually prevents complication, and the main purpose of the secondary prevention is like screening, early diagnosis and adequate treatment. Like screening मतलब हम HRCT करते हैं. early diagnosis means हम rapid test करते हैं और prompt treatment, as you know, like Febiflu. देन हम आइवरमेट्रिन और डॉक्सी लेते हैं टू रिस्टोर द हेल्थ. एग्जाम्पल्स आर पैप स्मीयर टू नो सर्वाइकल कैंसर, so to avoid in early time only. Then measurement of BP to avoid whether it's hypertension, इसलिए क्लिनिक में BP मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सेकेंडरी पर्टिकुलरली डायग्नोसिस पे फोकस करता है. नेक्स्ट कमिंग टू द टर्शियरी प्रिवेंशन. टर्शियरी प्रिवेंशन इट सिग्निफाइज इंटरवेंशन इन लेट पैथोजेनेसिस स्टेज. मतलब एक बार डिसीज हो गया उसके बाद जो भी हम मेजर्स लेते हैं टू रिड्यूस और लिमिट द इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी, उसके लिए हम ये यूजुअली करते हैं. मिनिमाइज द सफरिंग कॉज्ड बाय एग्जिस्टिंग डिपार्चर ऑफ गुड हेल्थ, एंड लास्टली प्रमोशन और प्रमोट्स पेशेंट्स एडजस्टमेंट. सो दीज आर द टर्शियरी प्रिवेंशन. एग्जाम्पल है इसमें पर्टिकुलरली यूजुअली प्रॉम्प्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक्स. थ्रोम्बोलाइटिक्स हम यूजुअली एडमिनिस्टर करते हैं एमआई पेशेंट में, तो ब्रेकडाउन करता है. देन कम्स इज स्पीच थेरापी इन CVA पेशेंट. स्पीच थेरापी देते हैं क्योंकि सर्बोवास्कुलर एक्सीडेंट में स्पीच थोड़ा डिफॉर्म रहता है, तो टू रिटेन फंक्शनल एबिलिटी ऑफ स्पीच यू विल डू स्पीच थेरापी. देन थर्ड वन इज लाइक रिहेबिलिटेशन टू रिटेन फंक्शनल एबिलिटी. मे बी रिहेबिलिटेशन मेडिकल का हो सकता है, वोकेशनल का भी हो सकता है, सोशल हो सकता है और साइकोलॉजिकल भी हो सकता है. द मेन फंक्शन ऑफ रिहेबिलिटेशन इज टू रिटेन, रीमोटिवेट एंड reutilize the functional ability. So these are the examples for tertiary care. So let's summarize the topic.
So in that particularly 4 levels of prevention are there: primordial, primary, secondary, tertiary. Primordial, lifestyle modification. Prevention is related to immunization or specific protection. Secondary is particularly related to screening, early diagnosis, treatment. And tertiary prevention mainly focuses on rehabilitation aspect to retain functional ability. So this is the summary. So hope you have understood a particular topic. Thank you so much for watching my channel, and do subscribe my channel, that is Nursing Gyan. Like and share this particular video. Thank you so much for particular watching this video.